Hello guys, this is Anshul Tyagi. I'm an MBBS third year student from Omandra Government Medical College. Okay, so in today's video, I'll be speaking about the basically the intro part of my channel. What will be the what will be my channel regarding the videos that I'll upload on it, and the second part of today's video, the topic, the title, bikes for beginners. Okay, so first let's come to the intro part of the today's topic. Basically, in introduction, I like to speak about my channel. It will be a motor vlogging channel. Okay, so a few of you will be wondering why I'm speaking in English, okay, living in India, because it's one of the most common spoken language throughout the world. Second common after the Chinese Mandarin language. And some part I'll also talk in Hindi, okay, because Hindi is also one of the common spoken languages, the third common spoken language in the world. And I can also speak in other languages like as Tamil, Punjabi. I know 4 languages, okay. English, okay, Tamil, Hindi, and Punjabi. I also know a few other dialects, okay, like as Rajasthani. So most of the video I'll be speaking in English and Hindi. Okay. So this was the basic intro about my channel, motor vlogging channel. Later on, once the situation of our country gets under control, the lockdown gets over, the pandemic gets over, I'll upload videos regarding the motor vlogging part, the main part of this channel. While I'll travel to certain beautiful destinations. Okay. So that's the basic intro about my channel. So coming to today's topic, bikes for beginners. So we see here 2 bikes, a bike in 100cc and a bike in 350cc. Okay. Now this bike is around 100 kg and this bike is around 200 kg. Okay. Now this bike is not so powerful, okay. And but this bike is quite powerful. Okay. So अगर मैं मेन बात कहूँ तो शुरू में हमें छोटी बाइक लेनी चाहिए, क्योंकि मैं ये बात खासकर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो उम्र में छोटे हैं, शरीर में छोटे हैं, ठीक है, जो बिगनर्स हैं इस बाइक लेने के मामले में शुरू में छोटी बाइक प्रेफर करें। तो छोटी बाइक जो हमारी ये जो है कम पावरफुल होती है, इसकी माइलेज अच्छी रहती है, क्योंकि मेंटेनेंस वो रहता है, और क्या है, ऐसी बाइक लेने के कई फ़ायदे रहते हैं, ठीक है। तो अगर जो बाद में कभी तुम्हें चलाने की ज़रूरत भी पड़े तो तुम्हें ज़्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ता। लेकिन अगर जो बड़ी बाइक की बात करें, हमारी बुलेट, तो ये बाइक हमारी बुलेट जो है बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। शुरू में मेरा जो टीनेजर्स से खासकर जिनकी उम्र छोटी है, 17-18 की है, 18 के हुए अभी, ठीक है, शरीर में भी ज़्यादा इतने ताकतवर नहीं है, जो बड़ी बाइक ना प्रेफर करें, बुलेट ना प्रेफर करें। तो मैं अगर जो अपनी खुद बात करूँ तो मैंने MBBS फर्स्ट ईयर में सिर्फ 1 साल यही बाइक चलाई थी, ठीक है। और सेकेंड ईयर में जब मैं आया तब मैंने खुद की तरफ से कुछ पैसे ला कर, घर से कुछ पैसे मिले थे, तब मैंने 1.5 लाख की बुलेट ली थी, ठीक है। तो ये अपनी बुलेट में इसमें बहुत ताकत है, ये मैं खुद कह सकता हूँ, और वजन भी बहुत है। ये अपनी छोटी बाइक है, इसमें इतनी ताकत नहीं है और ना ही इतनी भारी होती है, लेकिन चलाने में बड़ी आसान होती है बिगनर्स पर। और ये जो बाइक है हमारी, इसकी माइलेज जो है, अगर जो मैं कहूँ, अगर जो हम इसे इकोनॉमिक की स्पीड में चलाएं 40-45 की स्पीड में, तो 90 की माइलेज दे देती है, ठीक है। अगर जो हम इसे 60-65 की स्पीड में चलाएं सिटीज़ में भी ब्रेक यूज़ करके, ठीक है, तब भी 60-70 की माइलेज दे देती है। लेकिन अगर जो हम हमारी बुलेट की बात करें, पावरफुल बाइक जो हमारी, इसकी बात करें, इसकी मैक्सिमम माइलेज 40 देते हैं। कुछ लोग कहते हैं 50 भी मिल जाती है अगर जो इकोनॉमिक की स्पीड में चलाओ, लेकिन जनरली हम अपनी बड़ी बाइक्स को अच्छी स्पीड में चलाना पसंद करते हैं, 80-90 की स्पीड में, 100 की स्पीड में, ठीक है। तो ये बाइक जो है इतनी अच्छी माइलेज नहीं देती, मुश्किल से 25-30 की माइलेज देती है, ये कभी तो शायद 15-20 की देती है। बट वन थिंग गाइस, एट लास्ट, दैट इफ़ यू हैव एनी सजेशन, एनी क्वेरी, if you want me to make a video on a particular topic, you can suggest me that in the comment box, which is open. Okay? And one more thing, guys, before concluding my video, as a third year MBBS student, as a medico, I like to suggest to the people that are watching my video, please stay home, stay safe, unless and until the pandemic gets over, the lockdown gets over. Please don't unnecessarily come out of your homes. And even I am not so far away from my home. I am just 2 minutes away from my home. I am in Stanley Boys Hostel along with my friends. बाइक्स, जैसे ये बाइक मेरी TVS स्पोर्ट, या फिर जैसे स्प्लेंडर यूज़ कर सकते हो, जैसे प्लैटिना यूज़ कर सकते हो, और भी कई जो है 100 to 125 cc की रेंज में जो बाइक्स है। और जब आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए,
ओके, तब आप ये बड़ी बाइक्स प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है। So that's it. If you are new to my channel, please like, comment, share and subscribe, ठीक है। भाई लोग पूरा सपोर्ट करते रहो। नया चैनल है, ठीक है, नया यूट्यूबर हूँ। उम्मीद है कि सपोर्ट पूरा मिलेगा। एक्चुअली मिल भी रहा है, कई स्टेट से सपोर्ट आ रहा है। आप बोल। तो दोस्तों, इसी कंक्लूजन के और क्या बोलो, और कुछ बोलो। बता क्या है ये मेंटेनेंस, प्राइसिंग, माइलेज वाइलेज। इस पार्ट पे आ जाते हैं, इस सीन को काट देंगे फिर और क्या बोले, और कुछ बोले। वन पर्टिकुलर थिंग रिगार्डिंग one particular thing to my audience. Okay, and Yes, this is Joyce Hostel. This is friend. please conclude, बस इतना ही होगा, बहुत बस।